नमस्कार बागवान साथियों, मैं जगमोहन नलवा यारा परिवार की तरफ से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं फेसबुक लाइव सेशन में और आशा करता हूं कि आज आप यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानकारी लेके जाएंगे जो आपकी मदद करेगी ओवरऑल प्रोडक्शन और क्वालिटी को बनाने में। तो आज एप्पल एक्सपर्ट स्पेन से हमारे साथ है बियत्रिस और जो कि टेक्निकल और पोर्टफोलियो मैनेजर है यारा एशिया और अफ्रीका को ये रिप्रेजेंट करते हैं बायोलॉजिकल्स और यारा बीटा में। तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा और welcome Beatriz on Yara India Facebook Live session. I hope in this critical stage of fruit development, the importance of nutrition is quite important to enhance the fruit size, color, firmness, to enhance overall fruit quality and production. If you talk about your expertise of nutrition management will definitely help farmers to achieve their desired quality. Welcome, Bia. Thank you very much, Giacomo. So first of all, a brief introduction to myself and a welcome to everyone to join this session today. So for me, it's really a pleasure to be here. Sorry in advance because I cannot speak Hindi, but I will try my best to speak a clear English so that everyone can understand. As Giacomo was mentioning, my name is Beatriz Leube. You can call me Bea, that it's easier for everyone to pronounce. I am Spanish, I am an agronomist, and I have wide experience working in Yara Asia, in Asia in the last years. So right now my current role is technical and portfolio manager for biologicals in Yara Asia and Africa. In Yara, we call biologicals to the two ranges of products that are compounded by Yaravita, meaning the foliar fertilizers, and the Yara Amplix, the biostimulant nutrition. बागवान साथियों, इसमें जो बायोलॉजिकल्स का इन्होंने मतलब इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है और इन्होंने भी दे दिया है। और इसमें जो बायोलॉजिकल्स का मतलब है वो फोलियर जो न्यूट्रिशन यारा वीटा की जो रेंज है और जो बायोस्टिमुलेंट्स इसमें यारा बनाती है उसका ये पोर्टफोलियो देखते हैं। So, Bia, we would like to start with a question like, what is the importance of balanced nutrition in apple production? Sure. So, in every nutritional program, in every crop nutritional program, normally you always start in the flowering stage. For me, I always like to start I hope that you see my screen, I always like to start in the post-harvest or in the after-harvest moment. Why? Because you need to fill up your storage of nutrients to ensure that then the bud burst or the flowering stage will be successful. Because if we are not having the right level of nutrients at the end of the previous season, then we will not have the right flowering the season after. Of course, it's always recommended to do a foliar analysis to see what is the level that we are having at the late stage of the season. But we always recommend to make an application of bud builder, that it's a combination of the essential nutrients that in Yara we know that are crucial for the after harvest moment. And this Yaravita bud builder needs to be applied at 4 grams per liter. We are also recommending to apply Yaramila complex and Yaraliva Nitrabor at this same stage in soil applications. थैंक यू बिया। बागवान साथियों, जैसे कि बिया ने बताया कि अगले साल की या फिर इस साल की जो शुरुआत है वो स्टार्ट एक्चुअल में होती है पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से। अगर आप फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग अच्छा चाहते हैं तो ये जर्नी जो है अच्छी प्रोडक्शन और क्वालिटी की शुरू होती है पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन से। तो बैलेंस न्यूट्रिशन है आपके प्लांट सिस्टम के अंदर एज अ रिजर्व आपको रखनी चाहिए और उसके लिए जो है ये जो सजेस्ट कर रहे हैं वो याराविटा बड बिल्डर का पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन में आप फोलियर एप्लीकेशन करेंगे 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से
और सॉइल में जो है आप यारामिला कॉम्प्लेक्स जिसमें 9 न्यूट्रिएंट्स हैं और यारालिवा नाइट्रोबोर जिसमें 3 न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, वो बेसल एप्लीकेशन में आप करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए जो है एक सफिशिएंट जो न्यूट्रिशन का जो रिजर्व है वो प्लांट सिस्टम में रहे और आपके जो है अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग अच्छे से हो पाए। Then the next stage that we have in apple production is that bud burst. In this case, we need to ensure that the root system is having all the nutrients to develop the the root system, and then to develop the future leaves, the future flowers, and the future fruits. So for this, we are recommending to apply the Yaramila complex together with Yaraliva Nitrabor and SOP in soil applications, and then to promote the auxin activation and all the enzymes and so on, we recommend one application of Yarambita Sintrac at 1 milliliter per liter of water. Then, at the moment of the pink bud, so before the flowering stage, we all know that for good flowers and good pollination quality and good pollen quality, and pollen tube and so on, we need enough amount of boron. Boron it's an element with very low mobility in the plant that needs to be applied in high quantities before the flowering stage. And for this, we're recommending the Bortrac applied at 0.75 milliliters per liter of water. बागवान साथियों, जैसे कि बिया ने बताया कि इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बाद जो बर्ड ब्रेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेज रहती है और इस स्टेज में जो रिकमेंडेशंस यारा सजेस्ट करती है आपका यारा मिला कॉम्प्लेक्स, यारा लेवर नाइट्रोबोर और एसओपी जो है हम सॉइल में एप्लीकेशन देते हैं इसका डिपेंडिंग ऑन टू द आपका जो अगर 8 to 15 ईयर्स का प्लांट है उसमें 1 किलो यारामिला कॉम्प्लेक्स, आधा किलो यारालिवा नाइट्रोबोर और 250 ग्राम एसओपी जाता है। और अगर 16 टू 25 ईयर्स और उससे ऊपर का प्लांट है तो उसमें आप 1250 ग्राम यारामिला कॉम्प्लेक्स, 750 ग्राम यारालिवा नाइट्रोबोर और 250 ग्राम एसओपी आप सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि जिंक जो है हाफ इंच ग्रीन टिप है, आपको इसका एप्लीकेशन करना है ताकि ऑक्सीजन लेवल जो है प्लांट सिस्टम में अच्छे से बने रहे। ऑक्सीजन जो है एक ऐसा ग्रोथ हार्मोन है जो कि फर्दर जो एपिकल डोमिनेंस और एपिकल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, तो इसका जो है प्लांट सिस्टम के अंदर सफिशिएंसी में होना बहुत जरूरी है। और बात आती है पिंक बर्ड स्टेज में। पिंक बर्ड स्टेज में यारा विटा बॉट्रैक यारा सजेस्ट करती है और आप इसका एप्लीकेशन जो है कर सकते हैं ताकि फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में मदद मिल सके। पॉलिनेशन हेल्दी होगी, जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव रहेगा लंबे समय तक और पोलन हेल्थ अच्छी रहेगी, तो जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग में आपको इजाफा मिलेगा। यस पिया। Then we will have the fruit set. In the fruit set, we are having all the cell division happening. So first, we will turn the flower tissues into fruit tissues. So we are having a lot of a lot of cell division happening. For this, we need a lot of energy and we need to ensure the right amount of calcium and so on. And therefore, we recommend Stop It and Cenifos to be applied foliar, but also we need to ensure that the root system keeps working. Therefore, we are also recommending Yaramila Complex, Yaraliva Nitrabol, and SOP again. And then after the moment of fruit set, once we have all the cells already formed in the small fruit, then we are entering into the fruit development in which these cells that we have created are enlarging. So for this, we need a high amount of energy. Again, we need a lot of calcium to ensure that we are not having any sort of cracking and to safeguard our back in order not to have bitter pit problems. And then it comes the last stage that is right before the harvest, in which we will be focusing not anymore in growing cells, no, or in enlarging cells, but then we will be focusing in sugar content, in firmness, in calcium content, in skin quality, and what is more important, in the color of the apple. So each stage of the apple will need a different nutritional management.
तो बागवान साथियों, यहाँ पे बिया जो बताना चाह रही है कि उसके बाद जो स्टेज आपका फ्रूट सेट का आता है, फ्रूट सेट स्टेज में आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यारामिला, यारालीवा और एसओपी को बेसल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जो है, क्योंकि ये सेल डिवीजन का एक फेज चलता है, फ्रूट सेटिंग के बाद जो 35 से 40 दिन होता है वो सेल डिवीजन का पीरियड रहता है। उसको ट्रिगर करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि आपको फ्यूचर में साइज का इशू ना रहे, फ्रूट जो है यूनिफॉर्म साइज के रहे। तो उसके लिए यारा विटा स्टॉपिट और सेनिफॉस का रिकमेंडेशन यारा करती है। 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप यारा विटा स्टॉपिट करते हैं, और 2.5 ml के हिसाब से आप सेनिफॉस का फ्रूट सेट पे एप्लीकेशन करते हैं। और 10 दिन बाद जो है आप सेनिफॉस को एक बार फिर से रिपीट भी कर सकते हैं, ताकि जो सेल डिवीजन है वो ट्रिगर हो जाए, नंबर ऑफ सेल ज्यादा से ज्यादा बने, और आपका फर्दर जो जब आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चलता है, आफ्टर 40 डेज सेल एक्सपेंशन का फेज चलता है, सेल डिवीजन रुक जाता है। और जो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है, उस टाइम पे आपको जो न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि हाई डिमांड एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है इस पीरियड में, ताकि आपका फ्रूट का साइज बन सके, उसमें जो है अच्छी पिगमेंटेशन, कलर उसमें अच्छा आ सके, और जो फर्मनेस है फ्रूट में शेल्फ लाइफ के लिए, वो भी अच्छे से बन पाए। तो इस चीज को हमने इंश्योर करना है सही न्यूट्रिएंट्स को देके। So, Bia, what are the nutritional requirement at this stage, at fruit development stage, if we talk about? Okay, so as we were mentioning before, each stage, each growth stage will have a different nutritional requirement, okay? So we need all the nutrients in a tree, but we need them at different levels in different stages. So specifically during the smaller size, so at the very early stages of development of the fruit and during the fruit field, we will be needing essentially these nutrients that I have highlighted here, that are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and boron. And then I will go deeper explaining them a little bit more. राइट, बागों साथियों, तो इनिशियल स्टेज जैसे कि बताया बिया ने कि न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, वैसे तो मैक्सिमम सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं अपने एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट जो मेजरली जो है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन की रिक्वायरमेंट रहती है फ्रूट सेटिंग के बाद। बट फॉस्फोरस और कैल्शियम जो है बहुत हाई डिमांड में रहते हैं फर्दर जो फ्रूट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें जो है न्यूट्रिएंट की जो सफिशिएंसी है प्लांट सिस्टम के अंदर इंश्योर करनी है, जिसकी वजह से जो है आप जो डिजायर्ड आपकी जो क्वालिटी आप चाहते हैं वो आपका बन सके। सो Okay, यस। so then, yeah, I will go a little bit deeper in each one of them. So first of all, it's phosphorus. Phosphorus is the element for the energy in the plant. Why? Because it is the center of the ATP, adenosine triphosphate molecule. This might sound as a little complicated molecule, but it's the molecule that it's responsible for all the genetic information and for each process that requires energy. So we come already from a moment that we needed all the cell division, and now we need all the cell enlargement. So we need a lot of sugar transportation. We need all of this cell enlargement. We need a lot of assimilation from the leaves and so on. So all of this process require energy, and this energy is provided by the phosphorus. So as I was mentioning, phosphorus plays a key role in producing more cells and also increasing fruit size and fruit firmness, because if we are having more cells, it means that at the end the apple will have better firmness, okay? And also when we apply foliar sprays of high quality phosphorus, then we are improving the long-term storage potential. And not only this, but also we will have a positive influence in the color of the apple, as we see here. So we will not only have more fruits and better developed, but also we will have this improvement in the final color of the apple. तो बागवान साथियों, जो मेन न्यूट्रिएंट फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे जो रिक्वायर्ड है वो फॉस्फोरस, कैल्शियम है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं
तो फॉस्फोरस एक जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट को एनर्जी, जितने भी प्लांट सिस्टम के अंदर फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही, जितनी भी क्रियाएं चल रही है, उसको एनर्जी की जरूरत रहती है। अगर आप बात करें फंडामेंटल प्रोसेसेस जो चलते हैं, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, और वो आपको फास्फोरस देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एक एनर्जी का एक सोर्स रहता है। और फास्फोरस की वजह से जो है आपका ओवरऑल, अगर आप देखें, सेल डिवीजन तो हो ही रहा है, सेल एक्सपेंशन, जितनी सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली फर्मली पैक होंगी, ज्यादा सेल्स होंगी फ्रूट में, उसकी वजह से क्या है कि आपका फ्रूट का साइज भी बढ़ता है, वेट भी बनता है, और साथ ही साथ जो है कॉम्पैक्टनेस की वजह से जो है उसकी शेल्फ लाइफ और फर्मनेस भी बढ़ती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस। यस बिया। And then it comes the calcium. So calcium, maybe in our minds it will come only the bitter pit, no? But calcium also plays a very important role activating enzymes, okay? And it's essential for cell division, for cell elongation, that it's the moment that we're having now. So remember that first we create the cells and then we elongate them. So we enlarge these cells, okay? And then it stabilizes and ensures the permeability of the cell wall, protecting it from degradation. Okay, so we need to protect each one of the cells, and then we need to avoid this cracking. And what is the issue here? So the issue is that by the time that the fruit reaches 50 grams, okay, we need to ensure that over 50% of the total amount of calcium it's already inside the fruit. So we cannot wait until the last stages of the apple development when the apple is close to its final size to start applying calcium. So we need to start from the very early stages of the fruit development to avoid issues as the one that I am showing here, to avoid bitter pit, to avoid cracking, and to avoid other disorders that are related to calcium deficiency. यस बागो साथियों, सॉरी मैं एक पॉइंट जो है फॉस्फोरस का मिस कर गया था, जो बिया ने मुझे बताया था, वो था कलर को लेके भी। जो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में जो सनीफॉस है, या फिर फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, तो फॉस्फोरस क्या करता है, आपके एक एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन होता है, उसको इंड्यूस करता है, वो बनता है पीएल एंजाइम से। तो फॉस्फोरस को इंड्यूस करता है और ट्रिगर होता है एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन, जिसकी वजह से लाल रंग आने की क्रिया स्टार्ट होती है। तो आपका ओवरऑल, अगर आपकी साइज की बात करें, फ्रूट फर्मनेस की बात करें, शेल्फ लाइफ की बात करें, और कलर की बात करें, तो उससे फॉस्फोरस से आपको मिल सकता है। जो सेकंड न्यूट्रिएंट कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम क्या है कि वो एक तो एंजाइम्स को भी काफी एक्टिवेट करता है, और साथ ही साथ जो है सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन में मदद करता है, और स्टेबलाइज करता है जो सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहती है, इंटरनल ब्रेकडाउन नहीं होता है, आपकी क्रैकिंग समस्या, बिटरपिट की समस्या उसमें नहीं आती है। अगर हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है, जब तक 50 ग्राम तक का फ्रूट वेट हो जाता है, 50 ग्राम्स तक का, उससे पहले जो है 50%, 50% जो है कैल्शियम फ्रूट के अंदर ऑलरेडी स्टोर हो जाना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आपका जो है फ्रूट का क्वालिटी, आपके फ्रूट में जो डिसऑर्डर्स या कोई प्रॉब्लम, क्रैकिंग और बिटरपिट की समस्या जो है, उससे आप बचेंगे, और ओवरऑल जो है फ्रूट का साइज और क्वालिटी आपका बहुत बढ़िया बनता है। यस अबिया। Okay, so something that it's not written here, but I would also like to highlight is the importance of boron in this stage that we're having now of fruit development. If the boron was not supplied at the right amount before flowering, then we will have issues like malformation of fruits, or it will also increase the cracking, okay, because the boron is giving elasticity to the skin of the fruit. So if boron was not
applied before flowering in the right amount, or if it was not applied with the right product and then the absorption was not good, then I would also like you to I would like also to recommend you to make a foliar analysis. And if you see that you are low in boron, please make a boron application with the best solution possible. That is the one that we highlight here with Yaravita Bortrak. Okay, if you didn't apply before during the flowering stage. Another very important nutrient that will be also crucial for the color and the sugar transformation, it's potassium. For this, the solution that we are using in other countries is Yaravita Agri-Potash, with very good results in the final quality traits for the apple, meaning sugar content, firmness as well, and color. तो बागवान साथियों, यहाँ पे बिया बता रही है कि एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट, अगर कोई अगर फ्लावरिंग के पिंक बड स्टेज पे अगर बोरॉन कोई अप्लाई नहीं कर पाया है, बोरॉन का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी आप एक एप्लीकेशन उसकी कर सकते हैं अगर किसी ने पहले नहीं कर रखा, क्योंकि ये जो है सेल्स की इलास्टिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी सेल एक्सपेंशन हो रहा है, सेल्स एक्सपैंड कर रही है। तो अगर पहले किसी ने बोरॉन का प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं किया है तो यू कैन गो विद याराविटा बॉट्रैक। तो इससे जो है सेल वॉल में इलास्टिसिटी आती है और सेल एक्सपेंशन में मदद मिलती है। और साथ ही साथ जो है आपका जो सेकंड एलिमेंट बिया ने बताया, दैट इज पोटैश। पोटैश जो है ये स्पेन में इस्तेमाल करते हैं, याराविटा एग्री पोटैश। तो एग्री पोटाश से ओवरऑल उसका भी एप्लीकेशन करने से जो है टीएसएस लेवल जो है शुगर लेवल जो है अच्छा बनता है। ओवरऑल अगर आप क्वालिटी को देखें इन टर्म्स ऑफ फ्रूट साइज, फ्रूट कलर, फर्मनेस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आप फ्रूट बना सकते हैं इसकी एप्लीकेशन करके। सो बिया, व्हाट सॉल्यूशन इज यारा ऑफरिंग फ्रॉम फ्रूट सेट टू फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज? For fruit set to fruit development, in Yara we are working with two foliar solutions. So the first one would be to supply the high quality calcium that we were talking before, that it's with Yaravita Stop It, that I think from what I see in the chat is a very well known product. But then we will talk a little bit more afterwards for everyone to understand how to differentiate. So in this case, we recommend Yaravita Stop It applied at 2.5 ml per liter at fruit set and at fruit development, and then right before harvest to also avoid these storage issues. Okay, because remember that most of the times the bitter pit it's appearing after the harvest, so you don't see it at the moment of harvesting. So then in this moment we recommend to apply 5 ml per liter, so 20-25 days before the harvest. And then for this supply of high quality foliar phosphorus, we recommend to apply Yaravita Senifos. In this case, the dose would be 2.5 ml per liter after, at petal fall, and then repeat 10 days after. During fruit development, in this case, it will be 4 milliliters per liter, 40 days before harvest, and again 4 milliliters per liter, 20 days before harvest. सो बागवान साथियों, जो फोलियर एप्लीकेशन में आप जो सॉल्यूशन यारा प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप ओवरऑल फ्रूट की क्वालिटी इनहेंस करना चाहते हैं तो फ्रूट सेट पे अगर स्टॉपेट की बात करें, याराविटा स्टॉपेट की बात करते हैं, 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका फोलियर एप्लीकेशन करें। और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में 40 दिन पहले 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से हम फिर से इसका एप्लीकेशन करते हैं, और 5 ml पर लीटर के हिसाब से 20 से 25 दिन पहले आप एक बार फिर से इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्टॉपेट की 3 एप्लीकेशन विल डेफिनेटली हेल्प टू इनहेंस फ्रूट क्वालिटी। और अगर हम बात करते हैं सेनिफॉस की, ये भी इन स्टेजेस में ही जाता है। फ्रूट सेट पे 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं, और 10 दिन बाद इसकी एप्लीकेशन सेल डिवीजन को ट्रिगर करने के लिए फिर से की जाती है। फिर 40 दिन पहले 4 ml पर लीटर के हिसाब से, और 20 से 25 दिन पहले जो है आप 4 ml पर लीटर के हिसाब से फुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओवरऑल जो है फ्रूट का क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए। यस भैया। सो भैया,
How is Yaravita Stopit different from other calcium sources, such as calcium chloride, calcium nitrate, and chelated calcium? How Yaravita Stopit is different from them? This is a very good question and a question that we receive a lot. So before answering your question of Yaravita Stop It versus other calcium solutions, let's let's focus a little bit in the issue with calcium, no? Because the calcium, it's an element that we all know that it's needed in big amounts, especially at the end of the crop cycle for the apple. But we have a big challenge, that is to get the calcium safely into the fruit without damaging the crop. Because note that we are making these applications at the stage where the crop is the most sensitive. We cannot risk to have scorching in the fruit itself. But also we have a second challenge, that is that calcium, it's an element that it has very low mobility. Okay, so it happens the same more or less with the boron. Okay, so with calcium, we're having very less mobility. So we really need a formulation that it's ensuring that the calcium that we are applying, it's safe for the crop because we need high quantity, and it's efficient. So it is reaching the fruit. तो बागवान साथियों, जैसे कि बिया ने बताया कि कैल्शियम इस पर्टिकुलर स्टेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, इस जिसकी जो हाई डिमांड रहती है फूड क्वालिटी को बनाने में। और साथ ही साथ जो है कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका प्लांट सिस्टम के अंदर जो मोबिलिटी है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तभी जो है इसकी फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू जो है ज़्यादातर फार्मर्स इसकी एप्लीकेशन करते हैं। और कैल्शियम जो है मोबिलिटी कम होने की वजह से हमें इसकी जो रेगुलर जो हम एप्लीकेशंस है वो इंश्योर करनी होती है, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, वो हेल्दी रह सके और फर्दर जो है ओवरऑल क्वालिटी को भी हम इसको इंश्योर कर सकें। यस भैया। So then let's go comparing Stop It against other formulations. So note that for Yaravita Stop It, we use a unique formulation that we know that it's safe. Okay, we use this product worldwide, not only in India, so in many countries that are also producing apples. And we know that the application is safe even at super high dose, right, such as 10 liters per hectare. That this is not possible with other formulations because, for example, with when you're using chelated calcium, with the chelates, you are running in the risk of scorching the leaves. Okay, because this is something that is happening. And also, thanks to Stop It, and here I put an example of a trial that we did. With the formulation of Stop It, we can use a lower dose for a better efficacy. So in this specific trial that it was done in apple Royal Delicious, you see that in this case we used 5 milliliters per liter of Stop It and 8 gram per liters of EDTA calcium, so chelated calcium. What was the difference in yield? Much more higher yield. So this is almost 20 tons difference, and also in comparison with applying no calcium. Why is that? Because the efficacy of Yaravita Stop It is much more higher because of the formulation that we are using, that it's a formulation that we have studied and tested a lot, and we are improving it year by year. Okay, so it is more efficient than these sources. And also in Stop It, thanks to the coadjuvants that we are using, we don't need to protect the calcium. Okay, so that's why it's possible, and that's why we are having a very good tank mixability with other agrochemicals. That, please, if you don't know it, please go to a tank mix app that it's free for every user, and you can check the compatibility. So we are having a very high compatibility with the agrochemicals and the other fertilizers that are used during these stages, so during fruit development and before the harvest of the apples. हाँ, तो बागवान साथियों, जो आपको बात बताई गई है, जो याराविटा स्टॉपिट है, ये एक बहुत सेफ फॉर्मुलेशन है और वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में भी एप्पल प्रोडक्शन को, क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है
ये जो चिलेटेड या फिर आपके दूसरे फॉर्मुलेशंस हैं, उसके मुकाबले ये बहुत सेफ है, क्योंकि इसमें जो है बहुत हाई एंड क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ होता है, और जो फॉर्मुलेशंस यूज़ होते हैं, एडजुवेंट्स यूज़ होते हैं अच्छी पेनिट्रेशन के लिए, जो कि फ्रूट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। वो सेफ्टी इंश्योर करना इस क्रिटिकल पीरियड में, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं फ्रूट में स्कॉचिंग या किसी भी प्रकार का रस्टिंग इस टाइप की इफेक्ट ना आए। तो आपको सेफ फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर इसका हायर डोज में भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो भी इसका जो है दुष्प्रभाव जो है प्लांट या फ्रूट्स पे नहीं पड़ता है। ये बहुत ही सेफ फॉर्मुलेशन है, और इसका जो है बहुत सारे ट्रायल्स लगे हैं, टेस्ट किए गए हैं। जैसे आपको भैया ने बताया 5 ml पर लीटर के हिसाब से याराविटा का जहाँ पे ट्रायल लगा था, और 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से चिलेटेड कैल्शियम इस्तेमाल हुआ है। तो वहाँ पे आप सीधा-सीधा देख सकते हैं 20 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर का जो है प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो इसका ये इंश्योर करता है कि आप अगर सही कैल्शियम का सोर्स सही तरीके से आप उसको अप्लाई करें, तो वो आपके ओवरऑल प्रोडक्शन और क्वालिटी को एनहांस कर सकता है। यस भैया। Okay, the second product that you asked me to compare with, it's calcium nitrate. Calcium nitrate, it's not recommended to be applied foliar at these later stages of fruit development, because then you will promote leaf development. Okay, and in this moment, you don't want to move all the translocates into the leaves. So your intention is not to create more leaves, but to ensure that everything is going directly to the fruit, and especially in these orchards that you are having, like the local varieties in Himachal Pradesh, believe me, you don't leave more leaves. Okay, so that's why in later applications it is not really recommended the calcium nitrate. So it is better to apply calcium without nitrogen in the formulation. So that's why Stop It is not having nitrogen in it. सो बागवान साथियों, बहुत सारे फार्मर्स जो है फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम को देने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रॉपर फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। और इसके एप्लीकेशन करने से क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो आपके प्लांट सिस्टम में नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो उसको एलिवेट करेगा, और एलिवेट करने से जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। और जबकि हमें इस पर्टिकुलर पीरियड में वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, हमें फोकस करना है कि फ्रूट का जो है डेवलपमेंट अच्छा हो, फ्रूट का साइज अच्छा बने। तो इस चीज़ को ये सेफ फॉर्मुलेशन नहीं है करने के लिए, तो इट्स बेटर कि आप ऐसे चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जो आपके ओवरऑल क्वालिटी को एनहेंस करें। तो याराविटा स्टॉप इट जो है प्योर कैल्शियम क्लोराइड है, और इसका जो है बेटर फॉर्मुलेशन और सेफ भी है इसका एप्लीकेशंस। वो एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है, जो यूज़ कर रहा है उसके लिए भी सेफ है, और प्लांट के लिए भी सेफ है। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए डेफिनेटली याराविटा स्टॉप इट इज द बेस्ट ऑप्शन। And then no, one second, because there is one last that you asked me, that it's the calcium chloride. The normal calcium chip, so the cheap calcium chloride that it's available in the shops as well. Well, this calcium chloride is not formulated, because the raw materials that we are using for Stop It, we are using pharmaceutical grade. That is the best quality possible for Stop It. Why? Because as I was mentioning before, we need high absorption of the calcium. So we need this calcium to really reach the tree. And also we are using the best quality possible adjuvants to help in the penetration and wetting agents and so on, to ensure that the product efficacy is higher. So that's why normally whenever we perform a trial comparing our Yaravita Stop It against calcium chloride, we are finding much more better results. So in terms of content of calcium in the leaves, content of calcium in the fruits, and also final yield and percentage of calcium disorders. Why? Because of the high quality formulation that we are using, and especially in Stop It, but not only in Stop It, in general in every product in Yara. बागवान साथियों, जैसे कि भैया ने बताया कि जो कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो फुली फॉर्मुलेटेड नहीं होता है,
और जहाँ पे हम बात करते हैं, दूसरे भी काफ़ी प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड के आपको मार्केट में मिल जाते हैं लिक्विड में। तो उसके मुकाबले कैसे जो यारा बीटा स्टॉपिट है, वो क्यों ज़्यादा सुपीरियर रिजल्ट्स देता है, उसके बारे में ये कहना है कि उसमें जो उसका उसका जो रॉ मटेरियल है, वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का यूज़ करते हैं, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ होता है। और साथ ही साथ जो इसमें एडजुविएंट्स, जो एब्जॉर्बिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, ताकि जो कैल्शियम की जो पेनिट्रेशन है वो अच्छे से हो सके, और जो फ्रूट की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो साल की पूरी हो सके, जिसकी वजह से जो है आपका जो फ्रूट है वो बहुत हाई एंड क्वालिटी का बनता है। तो इस चीज को इंश्योर करना कि आप सही कैल्शियम फ्रूट को दो और सही क्वांटिटी में दो, ताकि जो है उसके रिजल्ट्स भी आए और आपको मार्केट में जो है अच्छा उसका रिटर्न भी मिले। Yes, Bia, and there is one more question that when we uh, when we are applying phosphorus in soil, then why do we need to apply foliar phosphorus application in fruit set to fruit development stage when we are already applying it in soil? Exactly. So this is a very good question that I am also getting a lot. So you are already applying NPK to the soil. So this NPK is containing phosphorus, and you are applying many other phosphorus products in the roots. So why do we also need it as foliar? So first of all, we need to ensure, as we were talking before, the phosphorus means energy for the plant. No, so we need to ensure that the energy is there when we need it. So we are having high demand peaks of energy. So, and then fruit development, fruit enlargement is one of these peaks of energy that we need, because also phosphorus will help us improve color and to improve fruit size. But then what is the challenge? The challenge is that phosphorus is an element that we need in, that we are having high demand, and this high demand is coming in different peaks, but also we are having very low availability of it. And I will explain why, but better, Giacomo, you translate this. या बागवान साथियों, जैसे कि भैया ने बताया कि फास्फोरस फूड डेवलपमेंट स्टेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो कि रिक्वायर्ड रहता है सेल एक्सपेंशन, फ्रूट के साइज को बनाने में, फ्रूट का जो कलर है उसको इंड्यूस करने में। क्योंकि जितनी भी ये आपकी ये प्रोसेसेस, फंडामेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं, इसको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी जो है आपको फास्फोरस प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल साइज को और कलर को इनहेंस करने के लिए तो जो है आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको फास्फोरस से मिलती है। और इसकी जो चैलेंज है वो दैट इज मोबिलिटी। ये लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट है, और इसको इंश्योर करने के लिए आपको ये सही चीज जो है फुल एप्लीकेशन के थ्रू देनी होती है। यस भैया। Okay, so then the first, we're going to talk about three issues that we are having, that it's reducing the availability of phosphorus. So the first one is the soil pH. So if the soil pH is acidic, meaning below 6.5, then phosphorus it's fixed by aluminium or by iron. So therefore it will be not be available for the plant to uptake it. And if we are having alkaline pH, then phosphorus is precipitating with calcium. So either we have a little slightly acidic soil, and then we are losing the phosphorus with iron and aluminium, or we're having alkaline, and then it gets precipitated by calcium. तो बागवान साथियों, यहाँ पे बेया बताना चाह रही है कि अगर फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है किस तरीके से हैम्पर होती है। दो रीजंस हैं। अगर आपकी जो सॉइल है ज्यादा एसिडिक है, मतलब 6.5 से नीचे है, 5.5 और कम है, एसिडिक है सॉइल, तो उस पर्टिकुलर केस में जो फास्फोरस है वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है एल्युमिनियम और आयरन के साथ। तो उसकी जो प्रेसिपिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो प्लांट सिस्टम में अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर बात करें कि आपका जो सॉइल है वो एल्कलाइन है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है ये कैल्शियम के साथ प्रेसिपिटेशन हो जाती है। इसकी जो कैल्शियम जो है के साथ प्रेसिपिटेशन होने से ये इसकी जो अवेलेबिलिटी है
प्लांट को नहीं हो पाती है। यस भैया। Okay, the second reason is that plants consume phosphorus only in the vicinity of the root system, meaning that the phosphorus needs to be really, really close to the root hair to be absorbed by the plant. This is not happening with nitrogen, with potassium, with magnesium. Okay, these other elements can be like a little bit far away from the roots. Remember that we're always talking about a few centimeters, but the phosphorus always needs to be placed really close by the roots. So that's why remember that at early stages of development in the season, we need to promote the root growth, okay? Because the best, so the wider the roots and the more the roots, then the better the absorption, okay? But if not normally, so we need a high amount of phosphorus because we need a high amount of energy. But then if the phosphorus is not really close by the root, it will not be absorbed. तो बागों साथियों, जो दूसरा रीजन है फॉस्फोरस की जो अनअवेलेबिलिटी का या बहुत कम अवेलेबल होता है प्लांट सिस्टम को, वो होता है कि ये एलिमेंट है फॉस्फोरस, ये बिल्कुल रूट्स के बहुत पास में ही प्लेस होना चाहिए। अगर बहुत नजदीक में वो न्यूट्रिएंट पड़ा है तो जो रूट्स है उसको अब्जॉर्ब करेगी, अगर वो थोड़े डिस्टेंस पे है वो प्लांट उसको ले नहीं पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम इनिशियल स्टेज में, जो बर्ड ब्रेक स्टेज में, हम आपको सॉइल में एप्लीकेशन करने को बोलते हैं। अच्छे क्वालिटी का फॉस्फोरस आप यूज कीजिए। उसका रीजन है ताकि रूट सिस्टम जो है उसका अच्छे से डेवलप हो सके। उसके लिए मैं आपको यारामिला कॉम्प्लेक्स सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग प्रकार के फॉस्फोरस दिए गए हैं। आपका पॉलीफॉस्फेट इसमें मिल जाता है यारामिला कॉम्प्लेक्स में, डाइकैल्शियम फॉस्फेट है, और आपका ऑर्थोफॉस्फेट है। तो जो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी है इनिशियल स्टेज में प्लांट सिस्टम को अच्छे से होती है, जिसकी वजह से रूट डेवलपमेंट बढ़िया होती है और न्यूट्रिएंट की अपटेक की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी लेस मोबाइल है, तो ये न्यूट्रिएंट है जड़ों के बिल्कुल पास में होगा तो ही वो प्लांट उसको ले पाएगा। यस भैया। थर्ड। And then the third issue that we are having is the soil temperature. When we are having cold temperature, then the availability of phosphorus gets reduced even more. So that's why in winter you will see that the plants are turning blue, a little bit blue. So if we are having cold temperatures or cold nights and so on, then the phosphorus it's less available also for the plant. So we are having these 3 main issues: the soil pH, that then we lose the phosphorus by precipitation with calcium or fixation with iron and aluminium. Then we are having the that the plants only absorb, the phosphorus when they're really close by. And then we have the issue with the temperature of the soil. तो बागवान साथियों, जो थर्ड इशू है वो है लो टेम्परेचर। क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार जो है हमारा फ्लावरिंग के टाइम पे या बारिश हो जाती है या कई जगह बजरी पड़ जाती है, ओला आता है, उस रात को टेम्परेचर डाउन चला जाता है। तो ऐसे ठंडे मौसम में लो टेम्परेचर पे है जो है फॉस्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है प्लांट सिस्टम के अंदर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऐसे क्रिटिकल पीरियड में जो है जब फॉस्फोरस की ज्यादा एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट को वो एनर्जी मिल नहीं पाती है, तो ही जो है तभी जो है यहाँ पे बात आती है कि आपको फोलियर फॉस्फोरस जो है उसकी एप्लीकेशंस करनी होती है। और जो तीन रीजंस बताए, पहला जो बियर ने बताया कि ये पीएच अगर दिक्कत है तो उस टाइम ये एल्युमिनियम और आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फिक्सेशन हो रही है, या फिर वो अपटेक नहीं हो पा रहा है। सेकंड रीजन जो है आपको बताया कि इसकी मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है सॉइल सिस्टम के अंदर। और थर्ड जो है टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के अंदर भी फॉस्फोरस जो है मोबाइल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो क्रिटिकल पीरियड जिस टाइम पे आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चल रहा है, एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव foliar application at this period. Yes, Bia, please. So what I am saying, it is not that we should eliminate the soil applications of phosphorus and then go only for foliar. No, please. So what I am saying is that the foliar applications before the moments of high demand of energy are a complement to the soil
applications to ensure that we will have the right amount of phosphorus exactly where we need it. So it's a complementary management of the crop. राइट सो बिया यहाँ पे कहना चाह रही है कि ये आप कंप्लीटली फोलियर एप्लीकेशन पे ही नहीं, सॉइल में भी जो है फॉस्फोरस का जाना जरूरी है ताकि रूट की डेवलपमेंट भी अच्छी हो सके और सॉइल के थ्रू भी फॉस्फोरस अवेलेबल हो सके। ये फोलियर एप्लीकेशन हम तब इसकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है जबकि हाई एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में क्रिटिकल पीरियड में चाहिए होती है, तो उस टाइम आप फोलियर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें ताकि एनर्जी की कमी ना हो प्लांट सिस्टम में। यस भैया। So once we know the importance of the foliar applications in apple of phosphorus, then we have Yaravita Senifos, that it's a product that we also use worldwide in the best, so in the countries that are producing the majority production of apple, and we know that it's improving fruit quality and yield when it's applied in this specific moment of fruit development. And what we know is that we are increasing also the percentage of fruits that belong to the class A. So the percentage of fruits that are having a better pricing, a better selling prices. So you can see here, okay, in this graph, that we are increasing in 24% the amount of fruits that belong to the high value classes. Okay, so we are increasing the size of the fruits, and also as we were seeing, in this picture that I was showing before, we are also improving the color of the apples. Oops, sorry. यस तो बागवान साथियों, जो फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है फुल एप्लीकेशन के लिए, तो यारा जो है यारा विटा सैनिफॉस को सजेस्ट करता है और ये वर्ल्ड वाइड जो है इस्तेमाल होता है ओवरऑल फ्रूट की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए। 11 देशों में जो एप्पल प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसमें इस्तेमाल होता है। उसकी वजह, इसकी एप्लीकेशन की वजह से ओवरऑल फ्रूट का साइज, कलर और जो ओवरऑल क्वालिटी है, फर्मनेस, वो इनहेंस होती है। और आप देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू के 24% जो मार्केटेबल यील्ड है, जो हाई एंड क्वालिटी, जिसको आप बोल सकते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी फ्रूट जो आपको मार्केट में अच्छा प्राइस देता है, आप 24% और इनहेंस कर सकते हैं याराविटा सैनिफॉस का एप्लीकेशन करके। यस भैया। Thank you, Bia, for this wonderful session. And now I would like to request farmers कि वो अपने जो है आप अपने प्रश्न जो है चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपका जो है क्वेरी को रिजॉल्व कर सके। Thank you very much, everyone. I hope that you enjoyed the session. I tried to be clear and not very long in my replies, but please, I will be now happy to answer as many questions as you might have. All right. So there is a question from Sajan Bin. So what he is saying is, देखिए आप स्कैन भी कर सकते हैं क्यूआर कोड को। ये एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं कि आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें उस पर जो क्यूआर कोड है उसको बागवान साथियों आप स्कैन कीजिए और आपको हिमाचल में जो 20 kg का जो बैग है वो अवेलेबल है और 20 kg के बैग को ही आप प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि हिमाचल के लिए जो, ताकि हम जो है बहुत सारी चीजों से बच सके, और क्यूआर कोड को ऑथेंटिसिटी के लिए जरूर स्कैन कीजिए। तो बिया, देयर इज अ क्वेश्चन दैट कैन वी स्प्रे याराविटा स्टॉप इट एंड सैनिफॉस टुगेदर? So the first, I would say yes, but you need always to check the compatibility of products, especially if you want to mix them with another fungicide or with another agrochemical. Please use the tank mix app and please put there your water, so the water amount that you want to spray, the amount of stop it Senifos, and the amount of the other agrochemical to ensure that you are using the right
the right order, okay, that you are following. So because we will recommend which steps you need to take, and to ensure that you are using the right combination of products. तो बागवान साथियों, इसमें जो स्टॉपिड और सेलिफॉस है, ये आपस में डेफिनेटली कंपैटिबल है और आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और करना क्या है कि आप बकेट में हर प्रोडक्ट को सेपरेटली घोलें, सेपरेटली घोल के एक ही बाल्टी में सारी चीज़ें मत डाल दीजिए, अलग-अलग घोलिए और ड्रम में डालिए। और दूसरी चीज़ है, अगर आप इसको फंजीसाइड के साथ स्प्रे कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप यारा का टैंक मिक्स आता है, उसमें कंपैटिबिलिटी चेक ज़रूर कीजिए। अगर आपकी इसकी एक्सेसिबिलिटी है, आपकी जो प्रतिनिधि है आपके एरिया में यारा के, आप उनको भी कॉल करके कंपैटिबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि कौन सा फंजीसाइड आप स्टॉपिड सेलिफोस कर सकते हैं। I don't know if maybe because I don't have access to type anything in the chat, but if you could put here, please, the link to access the Tank Mix app so that they can search there for their results. Or Chat maybe you box, can do it afterwards. Yeah. yeah, we can do it afterward. www.tankmix.com पे आप जो है सिमरन, आप इसको चैट बॉक्स में जरूर डालिए, जो हमारा टैंक मिक्स है। यूज ऑफ मैग्नीशियम, सो हियर इज अ फार्मर अंकुश चौहान। आप अंकुश जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि यूज ऑफ मैग्नीशियम आप क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टॉपिड सेनिफॉस मैग्नीशियम का एप्लीकेशन आप करना चाह रहे हैं कि यूज ऑफ मैग्नीशियम? ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। We have another question. No, How wait, can 1 second. I would like just to add before for the magnesium. Note that the magnesium is involved in the chlorophyll content and in the sugar movement. Okay, so it is a very important nutrient, and I didn't highlight it today, but this is the right moment also to apply magnesium. Okay, so right now and then in the post harvest especially, okay, to ensure this bud burst that we were talking before. Okay, so that's why in bud builder we are having magnesium as well. Role of magnesium. Okay, so the question was role of magnesium. Yeah, the farmer So the asked. role of magnesium in general. Yeah, in Okay, general. okay, so then the magnesium is the center of the chlorophyll. Okay, so the chlorophyll is the molecule that it's like our blood is the same but for the trees. Okay, so they need chlorophyll to do the photosynthesis and so on. So the magnesium is the center of this molecule, and also magnesium is highly involved in the sugar transportation. So whenever, yeah, and also to create a darker color in the leaves, normally you need to apply magnesium. And the issue sometimes is that then you are creating an issue with very high amount of potassium maybe, and then it is blocking the magnesium. So please keep your balance, and again, perform a leaf analysis and see in which levels are you. बाबू साथियों, जो मैग्नीशियम है डेफिनेटली ये एक मेजर कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, और क्लोरोफिल आपको पता ही है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और उसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस होगा तो तभी जो शुगर्स हैं वो बनते हैं, फोटोसिंथेट्स बनते हैं, एनर्जी ट्रांसलोकेट होती है, वो चाहे पत्ता बन रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, या फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल उसके लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेजर एलिमेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम उसको बनाने के लिए। और दूसरी बात है कि यू हैव टू चेक द पोटैश का लेवल, क्योंकि कई बार पोटैश अगर ज़्यादा हो तो मैग्नीशियम की जो अवेलेबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लीफ एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं। लीफ एनालिसिस के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्लांट सिस्टम में मैग्नीशियम का क्या स्टेटस है। Do we have more questions? Yes, we do have, no? How can we convert vegetative buds into reproductive buds in high density orchards? So this is what we were talking before about the post
harvest management. Okay, so we need to prepare the tree to have enough storage to create these buds. Okay, so these fruity buds. And also we need to ensure that at the beginning of the cycle, we are having a very good root system, okay, to support the bud burst and to have this very efficient. And also that we are not applying too much nitrogen, because then if we are applying too much nitrogen, then it's the same thing as we were saying before. Then we will promote vegetative growth. It's the same at the moment of the bud development. And of course, during the pruning, okay, you need to prune in a way that you know where are the vegetative buds and the fruity buds, okay, to keep one or the other. But pruning, it's a different session from today. तो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स को बनाने के लिए देखिए दो प्रकार के बर्ड्स होते हैं, एक वेजिटेटिव बर्ड होता है, एक रिप्रोडक्टिव बर्ड होता है। वेजिटेटिव बर्ड में जो है आपको पत्ता आएगा, और रिप्रोडक्टिव बर्ड में आपको फ्लावर और जो है फ्रूट लगेगा। तो इसको बनाने के लिए डेफिनेटली बिया ने बताया है कि पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम यारा बेटा बर्ड बिल्डर का भी फोलियो एप्लीकेशन करते हैं, ताकि जो आपका बीमा है रिप्रोडक्टिव बर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हेल्दी बन सके, और जो है न्यूट्रिशन का रिजर्व प्लांट सिस्टम के अंदर अच्छे से हो पाए, ताकि आपका जो है नेक्स्ट ईयर आपके फ्रूटिंग की जो चांसेस है वो ज़्यादा बेटर बन सके। तो इस चीज़ को इंश्योर करना है, तो आपका पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे आपका सॉइल में अननेसेसरी आप जुडिशियस यूज कीजिए फर्टिलाइजर का। बहुत सारे फार्मर जो है हाई नाइट्रोजन दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है रिप्रोडक्टिव बर्ड कम बनते हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी फ्रूटिंग कम होती है। तो मेक श्योर टू यूज बैलेंस न्यूट्रिशन, एंड पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन विल डेफिनेटली हेल्प आपके रिप्रोडक्टिव बर्ड्स बनाने में। डू वी हैव अनदर क्वेश्चन? Yes. Why apple yield is lesser this year, even we followed best apple practices, soil as well as foliar? Well, here when we are talking about yield potential, okay, I am not talking about different apple varieties and so on, because I assume that you're having always the same. So here we need to introduce the climate. Okay, so the climate, it is reducing the availability of nutrients. So it doesn't matter. We can feed the plant, but we are not nourishing the plant if those nutrients are not uptaken. So the first thing that we need to do is to use the highest quality possible for the products that we are applying. Okay, because this is what I was mentioning before, that maybe we are applying a super high dose of a whatever calcium product, but then the tree is not able to absorb this calcium. So then we're just losing our money. Then the tree is not uptaking this calcium, and then this we're ending up with less, so with higher number with storage problems, so etc. Or the same situation, for example, with boron. We are not applying a good boron, then we are having issues in the pollen quality. So then the pollination is not the right one. Or maybe what we will have is a very high temperatures during calcium mobility. So we were applying very good calcium source, but then we see that the calcium is not moving. What do we need to do in this case? And this is a session that we will have other day, I hope. In this case, it's where we need the help of the biostimulants. Okay, so each biostimulant will have a different target depending on the problem that we want to solve. So we will be able to increase the nutrient use efficiency, meaning that the calcium that we are applying, or the phosphorus, or the nitrogen, like whatever nutrient, it's absorbed and it's used by the plant. We can improve against abiotic stress. In this case, for example, cold stress, hot stress, etc. Or we can help also with some issues with the phytotoxicity. No? So we can increase, we can decrease the damage from
from phytotoxicity. So depending on the issue that we want to target, the first thing to have the best yield possible is to use high quality products, okay, to ensure that absorbance is the best one. And second, we also need the help of the biostimulants to improve the overall yield and help us to cope against these abiotic stresses that are reducing the availability of nutrients or that are damaging the crop directly. पंकज जी, डेफिनेटली जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब ये इसके लिए जो है क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कई जगह पे हाई टेम्परेचर्स या फिर लो टेम्परेचर, फ्लावरिंग के टाइम में बारिश आ जाना और ठंड पड़ जाना, तो ये फैक्टर्स रहते हैं जो कि एबायोटिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है प्लांट सिस्टम के अंदर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो है डेफिनेटली जब एबायोटिक स्ट्रेस हो, वातावरण का बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी जो है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्लांट सिस्टम में हो नहीं पाती है, तो डेफिनेटली आप बायोस्टिमुलेंट्स का भी सहारा ले सकते हैं ताकि उससे जो है न्यूट्रिएंट की जो यूज़र एफिशिएंसी है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, उसमें मदद मिल सके। और सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि द बेस्ट, जो भी बेस्ट क्वालिटी आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे पड़ता है। जैसे कि हम पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो है क्लाइमेट एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप नजरअंदाज नहीं करते। और फ्लावरिंग के टाइम पे अगर बहुत ज्यादा बारिशें या तूफान जैसे इस साल हुए, बहुत ज्यादा 8-10 दिन जो है फ्लावरिंग के टाइम में बहुत ठंड पड़ गई थी, बारिशें, हेल स्टॉर्म आए, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में डेफिनेटली फ्रूट सेटिंग का रेट डिक्लाइन कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप एबायोटिक स्ट्रेस से लड़ने के लिए बायोस्टिमुलेंट्स का भी इस्तेमाल करें। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? Yes, so they're asking if Propinep is compatible with propinep, yes, propinep salt, it's a fungicide. Yes, so I don't know. Yes, Do you see it in my screen? 1 second. Present. Stop screen. 1 second, because I will share. Yes, screen. we have here. results in tank mix. Yes, Yes, we can. exactly. Yes, compatible. So I think, इसमें बस ये करना होता है, प्लीज दादाजी, इसमें क्या करना होता है कि आपको स्टॉप इट जो है कंपैटिबल है प्रोपिनेप के साथ, आपको सेपरेटली घोलना होता है। तो टैंक मिक्स में जब भी आप सर्च करेंगे, आप टेक्निकल डालें या ब्रांड नेम डालें, उसके बेसिस पे आपको अगर ये राइट ग्रीन कलर का टिक आएगा तो इट इज कंपैटिबल, बट ये घोलना सेपरेटली है। So in the case you want to know more, please click here on the PDF, and then it will open with exactly the order that you should follow, okay, and what are the doses that we checked. If you want to test a different dose, please request a new one to be 100% sure that it's compatible. Yes, Bia, can you come to the previous slide? Tank mix, yes. प्लीज दादा, यहाँ देखिए जो ये ऑर्डर है 11 बीटा स्टॉप इट को आप पहले इसको मिक्स करेंगे, जैसे इसमें आधा लीटर दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप इसमें कोई और प्रोडक्ट भी इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया, फ्लोबेंडामाइड। फ्लोबेंडामाइड सॉल्ट जो है आपके सुंडियों के लिए इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड, उसको मिक्स करना है, घोलना है। उसके बाद इसमें एंट्रागोल जो आप यूज करते हैं प्रोपिनेप, वो इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये तीनों चीजें कंपैटिबल है, बस घोलना आपने सेपरेटली है और टैंक मिक्स में ये हो जाएगा। तो आप इसमें टैंक मिक्स का जो है, आप जो आपके प्रतिनिधि है नियर बाय यारा के, आप उनसे भी ये संपर्क कर सकते हैं या फिर टैंक मिक्स उस पर भी जाके खुद देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is your recommendations to improve hail damage fruit? Okay, so the first thing is, if the damage is already done, there is nothing that we can do. Okay, so we cannot go back with glue and put together the skin of
the fruit. Okay, so this is something that unfortunately there are no magic solutions. Okay, and against hail damage, the best is to protect the crop with a net that I see that you're already doing. But after the hail damage, if the hail damage is not very severe, okay, and you can still save the crop, what you need to do first is to produce new leaves, okay, because normally the big damage is done in the leaves. So the leaves are broken. The solar panels that the plant is using, okay, to generate photoassimilates and sugars and so on for the fruit, those are broken. So the first thing is that you need to regenerate leaves. Okay, so for this, if I am not wrong, in Yara India, you're recommending calcium and boron, yeah, Captrack. So you're recommending Captrack, okay, for this purpose, okay. So not only to generate more leaves, but also these leaves need to be strong enough. And also, it would be very good if you can combine this with a biostimulant, okay, for faster and better growth of these leaves, and also to protect the fruits that we have, okay, that these fruits are in a very bad moment, okay, because as I was saying, all the leaves are broken, so we need to protect also this fruit. So this, in this case, I would recommend to use Yara Amplix OptiTrack for a better recovery of the crop. Okay, so it would be the CapTrack and also the Yara Amplix OptiTrack. बागुन साथी, ये इसमें जो हमारा जो रिकमेंडेशन भारत के अंदर रहता है, वो हम यारावीटा कैट ट्रैक, वो डिपेंड करता है कि हिल डैमेज कितना हो रखा है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है. अगर तो बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से डैमेज हो रखा है तो उसको कंप्लीटली रिकवर करना पॉसिबल नहीं है. बट डेफिनेटली अगर वो उसमें थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं, उसको अच्छे तरीके से रिकवर किया जा सकता है. यारावीटा कैट ट्रैक में कैल्शियम, बोरॉन, जिंक और नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये जो न्यूट्रिएंट है, ये इस पर्टिकुलर पीरियड में रिक्वायर्ड रहते हैं हीलिंग के लिए. और इसको एनहांस करने, इसका जो हम सजेशन आपको देंगे वो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका फोलियर एप्लीकेशन कीजिए. इसके 2 एप्लीकेशन करने हैं आपको. एक जैसे 48 आवर्स के अंदर आप पहला एप्लीकेशन कीजिए. आप इसको फंजीसाइड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो दूसरा एप्लीकेशन है वो आपको करना है 10 दिन बाद, हफ्ते से 10 दिन बाद सेकंड एप्लीकेशन कीजिए. फास्ट रिकवरी के लिए इसमें आप जो बायोस्टिमुलेंट है उसका भी आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं. यारा उसमें यारावीटा बायोट्रैक आपको सजेस्ट करती है, या फिर आप एजी बूस्ट भी आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसका फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं कैप ट्रैक के साथ, ताकि आपकी जो है फ्रूट्स की फास्टेस्ट रिकवरी हो सके. बट डेफिनेटली जो अल्टीमेट वो है वो एंटी हिल नेट्स है. डेफिनेट आप एंटी हिल नेट्स जरूर लगाएं फ्यूचर में, क्योंकि हेल स्टॉर्म से काफी ज्यादा डैमेज होता है. 5-10 मिनट में ही आपके साल की पूरी मेहनत खराब हो जाती है. तो मेक श्योर कि आप उसको, अगर डैमेज ऑलरेडी हो चुका है तो आप कैप ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. Yeah. Okay. The next question that you have is Yara brochure states Xenifos should be used twice for some crop. Would it be sufficient? Here I assume that you are talking about other crops that are not apple. Okay, so each crop is having a different nutrient requirement. So as it is mentioned in the brochure, that right now I don't have it in my hands, but please always follow the official recommendations of Yara in the brochures or in the label for each one of the crops. And if you are not sure about how many times you should apply, please contact to your local agronomy colleague, okay, that will be able to guide you as best as possible. But yes, for each crop, we have different recommendations for the same product. यारावीटा सेनिफॉस की हम बात करें तो इसका जो हमने क्रॉप लाइन आपको दिखाया भी था, उसमें हम जो रिकमेंडेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी होगी फ्रूट सेटिंग पे 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप फुल एप्लीकेशन करेंगे सेनिफॉस का, और 10 दिन बाद 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से फिर से करेंगे, जस्ट टू ट्रिगर द सेल डिवीजन. ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेल जो है हम पर फ्रूट तैयार करेंगे ताकि आपका फर्दर फ्रूट साइज में कोई इश्यू ना आए.
और जो उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम करते हैं 40 डेज बिफोर हार्वेस्ट, और जो लास्ट है वो 20 डेज बिफोर हार्वेस्ट हम करते हैं। तो आप जो लेटेस्ट यारा का क्रॉप प्लान है, मैं सिमरन को चाहूंगा कि आप ये अटैच कर दें इसमें, अगर पॉसिबल है तो, हमारा यारा का जो क्रॉप प्लान है। Okay, does calcium application here? Does calcium application in early stages lead to leaf scorching? What must be the quantity of calcium application? So this is what I was talking about. That with Yaravita Stop It, we have checked that even in very high dose, we are not causing any scorching. So that's why the dose that we are recommending, that is 2.5 ml per liter, as we are seeing now in the screen, it's a safe dose to be applied. तो बागवान साथी, जैसे कि बिया ने बताया कि यारा का जो कैल्शियम है ये बहुत ही सेफ फॉर्मुलेशन है, हायर डोज पे भी स्कॉचिंग नहीं करता है, जो कि बहुत सारे दूसरे जो कैल्शियम्स हैं उसकी एप्लीकेशन करने से कई बार स्कॉचिंग पत्तों में भी और फ्रूट में भी आ जाती है। तो यारा बेटा स्टॉप इट जो सेफेस्ट फॉर्मुलेशन है, आप उसका इस्तेमाल करें, और बेटर एब्जॉर्प्शन भी इसका अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो फार्मर्स आज की डेट में, अगर हम हिमाचल की बात करें, जे&के की बात करें, जो बेस्ट क्वालिटी एप्पल प्रोड्यूस आज की डेट में कर रहे हैं वो यारा यूजर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि जो इनकी फुल एप्लीकेशन है बहुत हाई एंड क्वालिटी के हैं, और जो बैलेंस न्यूट्रिशन सॉइल में भी काफी अच्छे रहते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Can we mix Yara Stop It with Bortrac at fruit development stage for lenticel breakdown? What would be a better option, Stop It plus Cenifos or Stop It plus Bortrac? Again, please to check compatibility, go to the tank mix app. This is the best option possible. Then just one comment. Bortrac is a fantastic product, but boron can be toxic if we are applying excess amount of boron. Okay, so that's why I am always saying, so the peak of boron is required before flowering, and then the plant still needs boron. Okay, but if you apply too much boron, then this can be toxic for the plant. And we will be having a lot of problems. So the best is for you to do a leaf analysis to know in which level of boron is your orchard. Okay, so this is the first thing. So please take care with boron itself, because in excessive amount it can be toxic. So in this case, what would be a better option? Stop It plus Cenifos or Stop It plus Bortrac. So it will be Stop It plus Cenifos and Bortrac only if you know that your boron levels are low. यस। तो शुभम जी, जैसे कि बताया अभी ने कि इसको बोरॉन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और इस अगर जरूरत से ज्यादा भी इसका एप्लीकेशन किया जाए तो टॉक्सिक हो सकता है। तो टैंक मिक्स में इसका जरूर देखें, टैंक मिक्स में ना भी देखें, अगर आप हमारे प्रतिनिधि से भी बात करेंगे तो हम भी आपको बता देंगे। बट बोरॉन का जो है लीफ एनालिसिस अगर आप करते हैं, आपका स्टेटस क्या है बोरॉन का लीव्स में, अगर वो कम है तब आप डेफिनेटली स्टॉप इट प्लस बॉट्रैक का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है कि घोलना ही अलग है। जैसे 500 ml आपने स्टॉप इट लिया और उसमें उसको घोला और ड्रम में डाल दिया, फिर 5-7 लीटर फ्रेश पानी लेके आप 100 ml बॉट्रैक का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तभी अगर आपको पता है कि आपने आपकी पहले अगर बोरॉन का लेवल बहुत ज्यादा पहले ही है तो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, तब आप स्टॉप इट और सेनिफॉस के साथ ही जाइए। Yes, can we have next question? Okay, is it necessary to have some amount of boron while spraying calcium for its absorption? So if the question is if you need to co-apply calcium with boron for better absorption of calcium, then the answer is no, you don't really need this boron. But if you want any nutrient to be effective in the plant, then you need to have the right amount of the other nutrients already in the plant. Okay, if you are not having boron in the tree, then the calcium, no matter how much calcium you are applying, that then the calcium will not be efficient. Okay, because the tree is not having boron. So then you need to have a sufficiency of all the nutrients, nitrogen, phosphorus, magnesium, zinc, molybdenum, everything
for calcium to perform, okay, and for calcium to have a good efficacy in it. So you don't need to co-apply boron together with calcium in the same application, but it is always good to have a sufficient amount of boron for the better performance of the calcium. तो यहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे फार्मर्स की जो वो आती है कि भाई कैल्शियम को अपटेक करने के लिए जो है एब्जॉर्प्शन के लिए बोरॉन की रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी कर दूं। देखिए बोरॉन की जो रिक्वायरमेंट है सॉइल सिस्टम में जो कैल्शियम को अपटेक करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है आपको, क्योंकि बोरॉन एज अ कैरियर कैल्शियम को अपटेक करने में मदद करता है। बट जब आप फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं कैल्शियम की, उस समय पे आपको बोरॉन की जरूरत इतनी नहीं है एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि आप वो डायरेक्टली जो है आप फ्रूट के ऊपर या पत्ते के ऊपर दे रहे हैं। तो फ्रूट के ऊपर जब दे रहे हैं तो उसकी जो स्किन में जो बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं उसके थ्रू उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ आपका मतलब। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम को अपटेक करने के लिए सॉइल से ऊपर अपटेक करने के लिए बोरॉन की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर बेटर अपटेक। Can we use 2020 to stop it? Since there is a NPK, which delta spray we have like 18, 18, 18, 19, 19, 19. So Jitinder Rana ji is asking, can we mix NPK with stop it? So for compatibility, please check in the tank mix, but then it doesn't make sense to apply them together, because stop it would, the best performance is when you're applying foliar stop it, and then I assume that this triple 20 you're applying it in the soil, so it doesn't really make No, sense. actually, we are actually there are so many farmers. What they do is they apply NPK as a foliar application also, Okay, not so just. then it is better if this triple 20 you are applying it at early stages of development, okay, when you are developing the leaves for vegetative growth, and then in the latest stages, not that many, not this triple 20 together with stop it, not because they are not compatible, but because it is not good for the apples and for the quality of the apples itself to have this triple 20 by the end of the cycle. तो इसमें जितेंद्र जी आपको अर्ली स्टेज में आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका पेटल फॉल हो जाता है उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें, बट क्योंकि अब फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चल रही है तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप इसको अवॉइड करें। Okay. If we spray, what could be the result against of separately? Okay, so the result is the amount of money in your wallet, and this is the difference. So in Yara, we always create the products and we develop the products for them to be highly compatible and to reduce the cost of applications. Okay, so if required, you can apply more times stop it and less time Zenifos, but we recommend to make co-applications when it's possible, simply because you are reducing your cost of application. सो इसमें देखिए डिपेंड करता है कि अगर आप के पास टाइम है और वो है, आप सेपरेटली इसको कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज सेपरेटली आप करते हैं तो डेफिनेटली उसके और ज्यादा जो है सुपीरियर रिजल्ट्स आते हैं, बट बहुत सारे फार्मर्स के पास ना समय नहीं होता है, टाइम नहीं होता है कि वो सेपरेटली इसको मिक्स कर सके। और अगर आप कर सकते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड कि सेपरेटली में उसको स्प्रे करना, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Okay, so the next question, I hope the translation is right, is if Yes, Zenifos will help with color, no? Yes, it is a Yes. question. Okay, so the answer is yes. With Zenifos, we are improving the color. So this is an example of a
very problematic variety of apple in color that you see that without Xenifos it was very problematic, and then you see how good Xenifos is performing in this very complicated case. तो संजीव जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको अंडरस्टैंड करना कि कलर के लिए क्या जो न्यूट्रिएंट है, बहुत सारे फार्मर्स को ये लगता है कि सिर्फ पोटाश ही कलर को इंड्यूस करता है, बट सही मायने में अगर आप फॉस्फोरस की बात करें, सेरीफॉस जो है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड जो है उसमें वो ट्रिगर करता है। देखिए PAL एंजाइम होता है जो है फॉस्फोरस उसको ट्रिगर करता है। जब PAL एंजाइम ट्रिगर होता है, एक्टिवेट होता है, तो वो एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन को इंड्यूस करता है। जब एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन इंड्यूस होती है तो फ्रूट में रेड लाल रंग आता है। तो डेफिनेटली जो सेरीफॉस है वो आपके जैसे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि भी 40 डेज बिफोर हार्वेस्ट एक एप्लीकेशन 4 ml पर लीटर के हिसाब से आप करें, वो जो है उसको एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन को ट्रिगर करेगा और उससे आपके रंग लाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और जो है 20 डेज बिफोर हार्वेस्ट भी हम आपको 4 ml पर लीटर के हिसाब से रेकमेंड कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल जब आप फ्रूट को हार्वेस्ट करें तब तक जो आपके फ्रूट में यूनिफॉर्म अच्छा कलर आ सके। यस, बिल्कुल सेरीफॉस कलर को इंड्यूस करता है। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, I don't understand. No. How many calcium sprays needed per season for quality products? So this highly depends on the variety, and if you're having a traditional orchard or if you're having a super high intensive cultivations. In this case, I don't know, Giacomo, maybe you can ask me here what is the normal practice that you're recommending in India, because for example here in Spain we can make up to 9-10 calcium applications, so that entirely depends on the climate as well. बट साहब मैं आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखिए हमारे इंडिया में जो हम रेकमेंड कर रहे हैं इसकी 3 एप्लीकेशन मिनिमम कर रहे हैं, मतलब 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप एक तो फ्रूट सेटिंग पे करेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन हम 40 दिन पहले हार्वेस्टिंग से कर रहे हैं, वो भी 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से कर रहे हैं, और जो लास्ट एप्लीकेशन है हम 20 दिन पहले जो है वो 5 ml पर लीटर के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप इस डोजेज पे 3 एप्लीकेशन भी करते हो तो दैट विल बी ग्रेट। अगर आप स्प्लिट में करना चाहते हो तो फ्रूट सेटिंग से लेके आप इस रेशियो को जो आप कर रहे हैं पर ड्रम जो है 2 लीटर जो स्टॉपिट है आपका पूरे सीजन में जाना चाहिए, मतलब 200 लीटर पानी का जो ड्रम है जितने एरिया में आपका लगता है, तो 2 लीटर उसके लिए पूरे सीजन में आप करिए। अब उसको आप 3 एप्लीकेशन में करना चाहते हैं या फिर 6, 7, 8 एप्लीकेशन में करना चाहते हैं, वो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। This question I don't understand. Size, what to use to improve size? What nutrients? To improve the size of the apples? Yeah. Okay, so then as we were talking before, the size of the apples start from fruit development. Okay, so if you want to have good size, then you need to start worrying about the size when all the cell division is happening. Okay, so during the fruit set stage, this is the moment when you need to start thinking about fruit size. But then the phosphorus and the Xenifos in this case will be what will help us enlarging the fruits. Okay, so first we create the cells, and we need to have as many cells as possible, and then we enlarge them. Okay, and for this enlargement, this is where we will be applying Xenifos, and this is where I was showing before here that with applications of Xenifos, we are increasing the amount of fruits that are in the best, so in the class A category. So we are increasing the marketable size. तो संजू जी फ्रूट साइज को इनहेंस करने की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है फ्रूट सेटिंग से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभी इसमें बताया कि जैसे आपकी फ्रूट सेटिंग होती है 35-40 दिन जो है सेल डिवीजन के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस पर्टिकुलर पीरियड में हम सजेस्ट करते हैं याराविटा स्टॉप इट और याराविटा सेनिफॉस की आप फोलियर एप्लीकेशन करें फ्रूट सेट पे, और 10 दिन बाद जो है आप सेनिफॉस को रिपीट करें।
2.5 ml पर लीटर। उससे क्या है कि सेल डिवीजन ट्रिगर होगा, नंबर ऑफ सेल्स पर फ्रूट आपके ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि 40 दिन बाद जो है लगभग फ्रूट आपका जो सेल डिवीजन है वो रुक जाएगा, सेल एक्सपेंशन का फेज आएगा। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स आपके फ्रूट में बने होंगे वही 40 दिन बाद वो एक्सपैंड करना शुरू करेंगे। तो जितनी ज्यादा सेल्स होंगे उतना आपका फ्रूट साइज बनता है। तो अभी सेल एक्सपेंशन का पीरियड है, अभी आप स्टॉप इट सेनिफॉस का एप्लीकेशन करते रहें ताकि जो एक्सपेंशन है फ्रूट, जो सेल का एक्सपेंशन है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके, तो मैक्सिमम जो भी आपका फ्रूट साइज है वो बन पाए। Does having any PGR products at foliar stage? No, the answer is no. In Yara, we don't work with PGR products. तो बागवान साथी, हम पीजीआर्स बनाते नहीं हैं, वी कंप्लीटली जो है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही हमारा रहता है। Yeah, please note that for PGR we need to follow the regulation of plant protection products. Okay, and in Yara we only work, as Giacomo was mentioning, we don't enter into the plant protection segment because we are specialists in nutrition of crops. So for color development at later stage, foliar or soil application, which one is better? Foliar. Why? Because we need, especially if we are doing late applications, okay, because we see that the color is not right and we are close to harvest and so on, we need the nutrients to reach the fruit as fast as possible. So therefore we need this phosphorus in foliar applications, just because of efficacy. If we are applying this into the soil, then remember that we were talking about the difficulties for absorption of phosphorus. Sorry, it needs to be placed close to the root, etc. So all the difficulties that we were talking before, plus the traditional varieties that you are having, that the trees are massively big. So the time required and the energy spent for the tree to absorb one nutrient from the root up to the where the fruit is located is massive. So for high efficacy of application, it's better to do it in foliar, especially for late applications if you are close to the harvest. प्रभात जी, फोलियर एप्लीकेशन ज्यादा बेटर है क्योंकि वो जल्दी और एफिशिएंटली जो है उसकी पेनिट्रेशन जल्दी और उसको अवेलेबिलिटी जो है न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से रहेगा। फॉस्फोरस जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले कि सॉइल से जो है उसकी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, पीएच, ये बहुत सारी चीजें, और रूट्स के बहुत नजदीक होना चाहिए न्यूट्रिएंट, तब जाके अपटेक होता है। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फोलियर एप्लीकेशन फॉस्फोरस की, तो डेफिनेटली वो जल्दी वो बेटर ऑप्शन है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? Some Yara products containing adjuvants will. Okay, this highly depends if you are applying only Sintrac in this case, or if you are applying Sintrac together with other product that needs this adjuvant. Because if you are applying only Sintrac, then no, we are already adding the best adjuvants possible for the best performance of the product. But if you're applying Sintrac together with another product, because we always recommend to do a tank mix, then if the other product needs an adjuvant to improve the penetration or the wettability or whatever adjuvant is needed, then yes, again, please check the compatibility with all of the adjuvants and the products and so on, and the Yara products together in the tank mix, and then be sure to follow exactly the order of addition in the tank. Yeah, actually, his question is little different. वेबर, इसमें जो है याराविटा, जेंटेक की या फिर याराविटा की कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, उसमें ऑलरेडी हाई एंड क्वालिटी के एडजुवेंट्स पड़े रहते हैं, और एडिशनली आपको उसमें ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप काइंडली उसमें एडिशनल पैसा अपना वेस्ट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन के जो एडजुवेंट्स पड़े रहते हैं। थैंक यू।
So I think that is the last question. So boron and calcium build the least mobile nutrients. It makes sense to spray them in combination with all the new tissues to be targeted with these two nutrients, as the new growth won't get them from the old one. You take, please. Okay, in this case, what we were saying is the same. So we don't need to promote new leaves. So we are not feeding all these new leaves. We are feeding them the fruits. Okay, and the fruits are fed with the leaves, with the old leaves mainly. So if the boron is sufficient, please remember that boron can be very toxic if it's applied in excess. If the boron is sufficient, then you don't need to apply more boron. The problem of calcium is that the calcium is needed in a very high amount in comparison with the boron. So the boron amount that is required by the tree is very small, and the calcium is very, very high. So that's why we don't recommend to keep applying boron, but then we recommend to keep applying calcium, okay? Because then the necessities of calcium by the end of the cycle are higher. And also the necessities of boron are displaced, because the necessities of boron are happening more during the flowering and during the fruit set and initial stages of growth. Sorry. सो इस केस में बाबू साथी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको एक तो इम्पोर्टेंट है कि बोरॉन की जो आप लीफ एनालिसिस जरूर कराएं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। और जहाँ तक बात आती है कि बोरॉन की अवेलेबिलिटी और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी, उसके बेसिस पे ही आप कैल्शियम और बोरॉन का एप्लीकेशन करें। और इस चीज़ को इंश्योर करें कि अगर बोरॉन आपके लीफ एनालिसिस में ज़्यादा है तो काइंडली उसका यूज़ ना करें, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। और कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है डेफिनेटली वो आप उसको इंश्योर करने के लिए आप यू कैन गो फॉर याराविटा स्टॉप इट। और ये कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि अगर लेंटिसल ब्रेकडाउन है और आपके पास बोरॉन की सफिशिएंसी नहीं है तो आप 100 ml ये बॉट्रैक और जो है 500 ml जो है याराविटा सेरिफॉस का एप्लीकेशन करके आप इस टाइप की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। Just wait. Okay, I see that we have one more question. What is the mechanism of biostimulant and seaweed extract in stress releasing of apple? Okay, so this would require another 2 hours of me talking about biostimulants. But I will talk about the mechanism of a biostimulant that we have available in India, that is Yaramplix OptiTrack, okay? Because I cannot just talk about the mechanism of seaweed, because each seaweed is different, is differently extracted, and it is having a different mechanism and a different mode of action, okay? So then I will be focusing only in the Yaramplix OptiTrack. Other day we can make a session about biostimulants if you want, and the different biostimulants that we are having. So in OptiTrack, the mode of action is a combination of nutrients plus active ingredients that we are extracting from apple. Sorry, from seaweed. So in our case, we're using the seaweed Ascophyllum nodosum. So what is the mechanism of action? We are extracting the mannitol, the fucoidans, the flavonoids, etc. So we are having many osmoprotectants that will help us coping against the abiotic stress. Because when we say that we are having abiotic stress, in reality, what we are having is an oxidation. So each active inside Yaramplix OptiTrack will have a different mode of action, and it's the combination of all the mode of actions together will help us cope against this abiotic stress, together with the nutrients that we are adding inside the Yaramplix OptiTrack. But this is a session that will require a lot of time for other day. साथियों, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमारा ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा लंबा चला गया है, और इसके लिए जो मैं चाहूँगा कि आपके जो भी फर्दर क्वेश्चंस हैं वो फिर एड्रेस होंगे। थैंक यू सो मच बिया बीइंग विद अस एंड taking out some valuable time for us, for our farmers,
And for any queries, please call Dr. Yara 1800-121-9272 and be in touch. एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में बागवान साथियों हम और भी ऐसे सेशंस करते रहेंगे जिससे आप जो है आगे फर्दर जो है आप बेनिफिट ले सकें. और जो हमारा मेन उद्देश्य है वो फ्रूट की क्वालिटी को एनहांस करना है और मैक्सिमम जो आपके पास फ्रूट है ए ग्रेड प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए. इफ यू हैव 80 to 90% ए ग्रेड प्रीमियम क्वालिटी फ्रूट, उसका जो है मार्केट में आपको प्रीमियम वैल्यू मिलेगा और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप उससे इंश्योर कर सकते हैं. Thank you so much, Bia. Thank you so much, Bhagwan Sathiyo. Namaskar. Thank you very much. Have a lovely night ahead because it's quite late for you, and for me it was really, really a pleasure. And see you soon again in Himachal. Yes, Bia. Thank you so much. Sure. Okay. Thank Good you. day.